अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 11th क्लास के इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बुक 3 से वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि बुक 1 से शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स को तैयार होते हैं, लेकिन बुक 3 से शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तैयार नहीं होते। अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके जो पेपर आएगा उसमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होंगे बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम पास्ट पेपर्स के अंदर आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोइम्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। उसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही हियर्स द रेन falling on the leaves? क्वेश्चन नंबर 2, what are the poets feeling standing in the dark? क्वेश्चन नंबर 3 है, what the picture of the Karachi slums do we get after reading the poem Sindhi woman? यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 4, does the poet want to make totally carefree? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, how can attributes of a god help in refining the character of a person? क्वेश्चन नंबर 6 है, what was the making the nose sweet? Question number 7, what does the night mail bring? Question number 8, does the night mail create any problem for the people? Question number 9, what did the reader tell the rider about the valley? Question number 10, write the central idea of the poem the feet. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, व्हाट आर द मोरल लेसन विच अल्लामा इकबाल वांट्स टू द कन्वे इन। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फॉर व्हाट पर्पस मैन has been allocated from the heaven in the schoolsmart's opinion. Next move करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, who was the sword in the bazaars of Egypt? Question number 14, how does the poet express his feeling of happiness? Question number 15, how do the attributes of God exercise their influence on the man's character? Question number 16, who was the Ozymandias? Question number 17, what do you feel after reading the poem Oh Where Are You Going? Question number 18, why has the poet used cannonballs to describe the fruits? Question number 19, why does the poet feel impressed by the Sindhi woman? नेक्स्ट हम मूव करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि शॉर्ट क्वेश्चन हैं बुक 3 से, उसमें प्ले में से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द गर्ल व्हेन शी एंटर्स द बस स्टेशन? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड नॉट the girl accompany the second man? Question number 3, why did the second man smile ironically to see the girl with the first man alone in the bus stop? Question number 4, how did the girl try to escape the killer? Question number 5, how was the girl sure that the second man was not a killer? Question number 6, did the girl want to go the police station to report the incident? Question number 7, why was Roger spreading against her daughter marriage with John? Question number 8, why was General Powers so suspicious of Cretan comings to the planet Earth? Question number 9, compare and contrast the people two planets. Question number 10, write a note on Cretan. Question number 11, is the end of the play convincing? नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, हाउ डज द गर्ल come to know that the first man is the killer? Question number 13, why could not the girl describe the killer? Question number 14, who was Cretan? Question number 15, how does Cretan impress General Powers? Question number 16, what is the purpose of Cretan's journey to the earth? Question number 17, why does Clay need money? Question number 18, what does Clay want to put the local newspaper? Question number 19, what does Miss MC Curtin think about children of the town? Question number 20, does Miss Curtin believe that there is a bell in the oyster? Question number 21, why does the clerk label return home? Question number 22, why did she ask for help from the first man? Question number 23, can the people of the earth compete with the people of the Cretan? नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फोरसी इन ईयर 5000? क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज अ क्ले गोइंग? क्वेश्चन नंबर 26, हु इज मिस मैकल कॉटन, हाउ डज शी फील अबाउट हर जॉब? क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज एप्पलग्रेथ कंप्लेंट
about the sea. Question number 28, why does Clark label return? Question number 29, what did Clay Larrabee find the black rose? Question number 30, what has attracted Harry and other people to OK by the Sea? Question number 31, what does Harry insist that there is a pearl in the oyster? Question number 32, what does Harry advise to the girl to do? Question number 33, did the girl becomes suspicious of the first man as the play progresses? Question number 34, what is Harry philosophy? ये थे 34 क्वेश्चन जो कि प्ले में से थे। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो जो आपके बुक 3 से शार्ट क्वेश्चन आने हैं वो आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड